A man's country is not a certain area of land, mountains, rivers and woods, but it's a principle, and patriotism is the loyalty to that principle. Good morning everyone. Happy felicitations to everyone on the celebration of Rashtriya Ekta Divas. Every citizen of India must remember that he is an Indian and he has every right in this country, but with certain duties. These are the famous words by the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. Commemorating his ideas and contributions to the united India, today the students of class 9 are going to present Ekta Divas celebration. Let's begin the program by seeking the blessings of God Almighty. I invite Hannah for the prayer song. हमको मन की शक्ति देना, माना विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे दो धर्म का, चले तो धर्म का, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। Thank you, Hannah. I now invite Chancellor to officially welcome everyone to this event. Good morning. I speak to you all to welcome each and everyone present here as we celebrate the wonderful occasion of Rashtriya Ekta Divas. Respected Principal Dr. S. Srinivasan, Vice Principal Mrs. Maria Thomas, teachers and my dear friends. We the students of 9th welcome you all to a virtual program to celebrate unity in diversity. The birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel is celebrated on 31st October every year since 2014 to honor his contributions to unite the states and create an atmosphere of unity and solidarity in India. This is an occasion for us to dedicate ourselves to preserve the unity, integrity, and security of our nation and to strive hard to spread this message among our fellow countrymen. Once again, I welcome each and everyone present here to sit back and enjoy a short but sweet program. Thank you. Thank you, Chancellor. Let us take Rashtriya Ekta Divas pledge. I invite Fiza for the pledge. I request all of you to kindly stand up and take pledge position. Good morning, everyone. Pledge position. I solemnly pledge that I decide myself to preserve the unity, integrity of the nation and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and the actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my
own contribution to ensure internal security of my country. Thank you and have a nice day. Thank you, Fiza. Here is Zaki with a Hindi speech. नमस्कार। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के लोक पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए कई योगदान दिए हैं। इस दिवस की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2014 में की गई थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश को हमेशा एकजुट करने के लिए अनेकों प्रयास किए गए। इन्हीं कार्यों को याद करते हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए जागरूकता बढ़ाने, युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाने और इस महान व्यक्ति को याद करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। दिल्ली के पटेल चौक पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर मालाएं चढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा सरकार द्वारा शपथ ग्रहण समारोह मार्च पास्ट भी होता है। रन फॉर यूनिटी मैराथन देश के विभिन्न शहरों, गांवों, जिलों, ग्रामीण स्थानों में की जाती है। विद्यालयों, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना के लोग बहुत बढ़ चढ़कर इन कार्यों में हिस्सा लेते हैं। दिल्ली के राजपथ में विजय चौक से इंडिया गेट के बीच सुबह 8:30 बजे मैराथन का भी आयोजन बहुत स्तर से होता है, जिसमें सारे नेताएं और अभिनेताएं हिस्सा लेते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, न्याय प्रणाली, यह सभी चीजें तभी सुचारू हो सकेंगी जब आवाज में एकता हो, और जिस दिन यह व्यवस्था सुचारू होगी उस दिन से देश के विकास में कोई कठिनाई नहीं आएंगी। किसी भी देश की ताकत सभी नागरिकों के आपस में एकता में होती है, और यदि देश बड़ा हो और उसमें विभिन्न धर्म, भाषा आदि के लोग रहते हो तो उन्हें एकता के डोरी में बांध कर रखना बहुत मुश्किल प्रकट होता है। लेकिन हमारे देश भारत की यही खूबसूरती है कि इतने धर्म, संप्रदाय, जाति आदि के लोग रहते हैं और उसके बावजूद हम सब आपस में मिलजुल कर देश की एकता को बनाए रखते हैं। सरदार पटेल ही देश के सभी नागरिकों को एकता का संदेश देते थे, और आज उसी का परिणाम है कि भारत आज़ाद है। भारत से अंग्रेज़ों को निकालना किसी एक अकेले व्यक्ति की तो बस की बात थी नहीं, पर जब लोगों ने आवाज़ में एकता दिखाना शुरू करी, तब अंग्रेज़ भी ज़्यादा देर भारत में टिक नहीं पाए और उन्हें इस देश को छोड़कर जाना ही पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता का प्रतीक ही माना जाता है। और अब मैं अंत करना चाहता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक अनमोल विचार से। मेरी यही ही इच्छा है कि अपना देश भारत एक अच्छा उत्पादक बने, इसमें कोई भूखा ना रहे, ना ही किसी को अन्न के लिए आंसू बहाना पड़े। धन्यवाद। Thank you, Zaki. Let us watch a small video presentation on the unity and diversity of our country presented by the students of class 9. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। चान तरज थे म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुर ताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदला रूप लेके बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும்.
उधर करता 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 दिन मिता का जन्म ताकत मिता का जन्म ताकत मिता का जन्म ताकत मिता का जन्म నన్నదనిగే నిన్నదనియా తీరిదంటే నమ్మదనియా నా స్వరము నీ స్వరము സംഗമമായി മനസ്വരങ്ങൾ അവതരിഞ്ചി എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর সৃষ্টি হো কই কোতান সৃষ্টি হো কই কোতান তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি করি চালু চালু મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ सुर बने हमारा Thank you, friends. I invite Sahala to deliver an English speech on Ekta Divas. Good morning, volunteer present here. India is a land of unity and diversity where people of diverse religion, tradition, culture, languages, and heritage live together in a single country. India is also the land of unity and diversity because the different groups of people cooperate with each other to live in a single society. Unity and diversity has also become the strength of India. Thus, to maintain the nation's unity and to acknowledge Sardar Vallabhbhai Patel's efforts in uniting the nation, National Unity Day or Rashtriya Ekta Divas is celebrated every year. The Rashtriya Ekta Divas or the National Unity Day is celebrated on October 31st in regard to the birth anniversary of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. He used his strength and determination to bring together many Indian princely states to form one united country, India, as we know it today. That's why he is referred as the Iron Man of India. The day of his birth, October 31st, therefore, celebrates his efforts and contributions. Sardar Vallabhbhai Patel was a very hardworking individual from his childhood. He became an Indian barrister and statesman. He was one of the leaders of the Indian National Congress and one of the founding fathers of the Republic of India. He took active part in the struggle of India. Sardar Vallabhbhai Patel became the first Home Minister and Deputy Prime Minister of India. Rashtriya Ekta Divas, National Unity Day, was introduced by the Government of India and inaugurated by the Indian Prime Minister Narendra Modi in 2014. The official statement for Rashtriya Ekta Divas by the Home Ministry of India states that the National Unity Day will provide an opportunity to reaffirm the inherent strength and resilience of our nation to withstand the actual and potential threats to the unity, integrity, and security of our country.
Every Indian should not forget that he is a Rajput, a Sikh, or a Jat. He must remember that he is an Indian and he has every right in his country, but with certain duties. Remembering these words of Sardar Vallabhbhai Patel, let's all pledge together to keep the unity and integrity of our nation above all individual preferences. Jai Hind. Thank you, Sahala. On the occasion of Ekta Divas, we had an inter-house poster making competition. Here is a PowerPoint showing the posters submitted by the students of blue, green, red and yellow houses. Thank you, friends. I now invite Vice Principal Mrs. Maria Thomas to speak few words. Good morning, children. In fact, you have made us really feel amazed at the performance, especially the video, everything, I should say, each and every piece that you presented. The speeches, the Hindi speech was so excellent, beautiful presentation of the video. I know you must have spent a lot of time preparing it, but it is so excellently created. I have no words to explain my deep appreciation. Wonderfully done. Actually, I know that you were given a very short period of time and time wasn't sufficient to go for an excellent or an elaborate program. But the short and sweet program that you have prepared is beyond words of appreciation, I should say. The class teachers and you, all the children who have contributed into the perfection of the work, deep appreciation. Well done. Ekta Divas. This is not only for one day. Ekta means unity. You know that our country, India, is a country that is so unique for its diversity in terms, its its culture, its languages, so many aspects we can say. There is no other country in the whole world which has so much of diversity. So in spite of all the diversities that we have, we stand together as one country, and India is our soul, India is our blood, our life. That feeling should be there, even though you are staying miles and miles away from the home country. That feeling of being an Indian, feel proud to be an Indian, and always have the Indian thoughts, Indian ethnic feelings in your mind and your actions. Okay, well done, beautiful program. Congratulations to all of you. Thank you, children. Thank you, ma'am. I now invite Hannah to propose the vote of thanks.
Good morning. It gives me immense pleasure to propose the word of thanks on the closing of the spectacular event. I'm here to thank all who have worked hard to make the celebration a great success. Let me take this opportunity to thank our principal, vice principal, and all the teachers for giving us this opportunity. I would like to express gratitude to the teachers in charge of this event, Mrs. Rukmani and Mrs. Sunina. Last but not the least, I would like to thank all my friends for their active participation. Special thanks to Indrajit and Mrs. Sunina for making the video presentation. Together, we have made this event a successful one. Thank you. Thank you, Hannah. Let us practice the valuable ideals of Sardar Vallabhbhai Patel for maintaining the unity and integrity of our nation. Let us follow the footsteps of the great soul to make a difference in others' life. Thank you all and have a nice day ahead.